Okay, so for everyone, we are starting today Ionic equilibrium, very important chapter. It is considered to be one of the difficult chapter. In fact, one of the most difficult chapter it is considered to be. But I'll tell you, if you keep asking me doubts, like I told you earlier also, if you keep asking me the doubts, you'll be able to solve all the problems. Okay, there is nothing like it is like thoda sa chemistry, jada math. But we need to understand what kind of mathematics we need to deal in this chapter. And I'm telling you, every year, it is a phenomenon without any exception. I'll tell you, if I ask the students after completion of the chapter na कि कौन से chapter you need to have a revision again or you want discussion over some topics, there are three chapters which will always appear from most of the students which want revision: thermodynamics and thermochemistry, ionic equilibrium, and then 12th का electrochemistry. These are the three important chapters जो लगभग हर बच्चा जो चाहता है रिवीजन चाहिए उनको इन चैप्टर्स में पूछना पड़ता है. Why these three chapters are important, I'll tell you again, because you need to have the clarity in what way you need to cover this chapter. First thing is thermodynamics and thermochemistry was a very long chapter. First thing, there were three sections: first law of thermodynamics, then thermochemistry, and then second law of thermodynamics. Other than that, there were third law and zeroth law also, which is not officially in syllabus, but still we discuss those things in short. But we were having a detailed discussion over first law and second law particularly, and thermochemistry part. So it's a long section, and particularly the second law wala part was highly conceptual also. That's why students feel difficulty in that section. First thing. Second thing, why ionic equilibrium? Now, after covering the chemical equilibrium, we have the basic idea why some reaction is which is having reversibility will reach the equilibrium. Why equilibrium state is so special point. Like I told you, the minima of free energy will be obtained at the equilibrium state, and that's the reason any reversible reaction which is starting from reactant or product will reach the equilibrium state. वो सब section discuss कर लिया. Even after that, what is so special about this chapter? First thing is the name itself says ionic equilibrium. That means we are going to deal with the ions, है ना. Ions will be involved in reversible reaction which will be achieving the equilibrium. तो पहली चीज तो ये आ गई, which was unique. अभी तक chemical equilibrium में mostly we were dealing with uh, the reactions which were in gas phase, और aqueous में भी ज्यादा कुछ नहीं किया ion से related. एक दो examples मैंने दिए, but other than that normally we are focusing on the gaseous state वाला normally, है ना. That was one part. In this chapter we are going to have the discussion over those reversible reactions which are involving ions. तो पहली बात तो ये है, but why this is difficult? Still we are going to deal with the reversible reactions only, which will be achieving the equilibrium. Why it is difficult? Because you will be dealing with almost 25 to 30 cases. That much variation you will be dealing with in this chapter. First thing. Second thing is, in all these cases, you'll find that there will be some extreme cases where you need to make some assumptions, like k ka value will be 10 raised to minus 6 minus 7. So what is the significance of this very low value of k? Or sometimes if you are getting k ka value 10 raised to 12, 10 raised to 16, what kind of assumption you need to make for this very big value of k? So all these things are involving some basic point of assumption, how to make the assumption, that we need to understand. And वहीं पे ये कहानी जो है ना, कुछ बच्चों को समझ में आती है, कुछ बच्चों से मिस हो जाता है. And that's why I'm telling you, whenever I'm writing anything, even a single word is not clear to you, you'll ask me. ठीक है. तो assumptions की बात देखोगे, पहले लेक्चर से ही तुमको दिखने लगेगा. फर्स्ट से मोस्टली सेकंड से तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट getting those kind of things where I'll be making some assumptions while doing the calculations or while deriving some formula. Okay, that's another part. So like I told you, there you'll be dealing with 25-30 cases. Now what happens ना, बच्चों को लगता है अगर 25 केस कमांड में नहीं है ना तो ये चैप्टर चला गया. इसलिए जब भी मैं उनसे पूछता हूँ ना कौन सा चैप्टर चाहिए, तो सीधा आई नहीं बोल देते, बिकॉज इतने सारे केसेस थे एंड आई वाज नॉट एबल टू हैंडल ऑल दोस केसेस. Now I'm telling you, you'll be getting some question from case number 1. So even if you don't know the remaining cases, you'll be able to get the marks from that section. So what you need to do, whatever we are discussing, you need to put effort in, you need to put best effort in every case, first thing. But after the completion of chapter, you may feel that, हाँ सर 12-13 केस तो समझ में आया, बचे हुए जो केसेस थे ना उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी और चाहिए, या फिर प्रैक्टिस थोड़ी और चाहिए. तो जस्ट कीप आइडेंटिफाइंग दोज केसेस जहां पर अभी भी वीकनेस फील हो रही है. So whenever we will be having second round discussion ना, तो you'll find that कि सर वो केस 1 to 5 तो मेरे को क्लियर है, केस नंबर 6 में I was having this type of issue.
है ना, बिकॉज यू आर गोइंग टू डील विद मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इन पैरेलल ना, एंड दैट्स व्हाई इट हैपेंस कि ठीक है थोड़ा सा कमांड आया, कुछ केसेस में अभी भी डाउट्स है, मैंने बहुत ज्यादा सोचा नहीं, या फिर डाउट्स आए तो मिस हो गया, मैंने पूछा नहीं, तो इस टाइप के सिचुएशंस आएंगे. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम रिमाइंडिंग यू, यू विल बी डीलिंग विद द केसेस, सम ऑफ द केसेस विल बी रिलेटेड टू ईच अदर, बट देयर विल बी many cases which are not going to have any relation with each other. So if they are not related, so एक केस नहीं भी आता है तो दूसरा केस हैंडल कर रहे हैं, तो you will be getting marks from those cases, है ना. And that's why I'm telling you, practically I'm not expecting कि तुम्हारा chapter complete हो and you are going to have the command over all the cases. But if you get the basic ना, बार बार मैं जो बात बोलूंगा ना mathematically, try to catch that part and then you will find that ना सर ने स्टार्ट के जो केस 10 केस डिस्कस किए ना, वही सर रिपीट कर रहे हैं रिमेनिंग 10 केसेस में. You'll find that. Okay, so just try to get that pattern. Why what I'm going to do in the first 10 cases particularly. Okay, if you get the command over 10 cases ना, तो उसके बाद पता चलेगा बाकी 10 तो रिपीटेशन है, और उसके बाकी बचे हुए 5 केसेस तो बहुत इजी, मच इजियर देन द previous cases. ऐसा आ जाएगा सिचुएशन. ठीक है, that's another part. Now this will also be having 2-3 sections. Like I told you, I'll be discussing today the fundamentals of ionic equilibrium, which will be required in various cases. First thing. Second part will be like I'll be discussing 10 cases which you need to deal. Again 25 बोल दिया तो डरने का नहीं है. When I'm saying 10 cases, these are 5 pair of cases. So if you deal with case number 1, तो case 2 आराम से चुटकी बजाते हो जाएगा. Case 3 किया तो 4 हो जाएगा, 5 किया तो 6 हो जाएगा, ऐसा. So you are going to deal with 5 pair of cases initially. Then we'll have a theoretical discussion again, like the concepts of acid base. What is Arrhenius acid, Bronsted-Lowry acid bases क्या होते हैं, Lewis acid bases क्या होते हैं. These kind of things we are going to discuss. And then a very particular point जो कि आगे तुम लोगों को जीओसी में जो लोग पैरेलल में जो हमारा जीओसी चल रहा है उसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ. वहां पर देखोगे ये दोनों पार्ट कॉमन है, इसलिए मैं कभी इधर आगे कभी उधर आगे होके we discuss that. तो वो पार्ट एक पूरा theoretical discussion होगा, जिसके numerical aspects भी आते हैं और जिसके theoretical aspect even in organic chemistry भी आते हैं. तो वो दोनों पार्ट डिस्कस करेंगे. And then we'll enter into a section of cases. One case will be called salt hydrolysis का case. Then we'll be talking about something called buffer solution, and then we'll be going for solubility of sparingly soluble salts और उसके केसेस आएंगे. And at the end of chapter you will be having indicators का concept. है ना, आपने पढ़ा होगा रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है, ब्लू को रेड कौन करता है. तो ऐसे बहुत सारे हैं इंडिकेटर्स, लाइक वी विल बी हैविंग फेनोक्सिलिन एंड मिथाइल ऑरेंज इन पर्टिकुलर, जिसकी बात डिटेल में करेंगे. तो विल बी टॉकिंग अबाउट कि ये इंडिकेटर्स में ऐसा क्या जादू है कि दे वर्क at the right time exactly. ठीक है, तो we'll discuss about that also. So this is the overview of the chapter we are going to deal with. When I'm saying ionic equilibrium, again I'm telling you the name suggests that we are going to deal with the reversible reaction which are going to achieve the equilibrium again, but they'll be involving one or more. In fact, there will be multiple ions present in those reactions as a reactant or product, or in both the sides. Okay, so when I'm saying ionic equilibrium, it is the equilibrium for reversible reactions involving one or more, in fact more ions ही रहते हैं in solution. So that's first part. Now when I'm talking about ions, so we need to know what are the substances which are going to give you ions. We don't have any container, any beaker, any vessel in the lab or in any industry जिसमें मैं बोलूंगा ये बॉटल जो है ना इसमें Na+ ions भरे पड़े, ये नहीं होगा. We'll be having acid होते हैं, base होते हैं, salts होते हैं, कुछ covalent molecules होते हैं. So now we need to know what are the substances which can be the possible sources of ions, particularly in aqueous solutions. तो वो जो substances होते हैं ना जो ions देते हैं उनको बोलते हैं electrolytes. इसका मतलब जो ions नहीं देंगे उनको बोलते हैं non-electrolytes. Now again, electrolytes can be of two types, strong and weak. When they are present in the solution, if they are 100% ionized, then we'll be calling them strong electrolytes. If the extent of or the degree of ionization is less than 100%, then we'll be calling them weak electrolytes. Is it okay up to this point? क्या मैंने बोला? I'll give you those points. So if I'm having electrolytes, those are the sources of ions, है ना? When they are present in solution, they are going to give you ions. If they are not giving you any ions, like glucose, urea, sugar, these are not going to give you any ion. So they'll be called non-electrolytes. Definitely, this chapter is not about non-electrolytes. ठीक है, तो पहली चीज ये. Now we are talking about electrolytes जो होंगे, they'll be of two kinds. First is a strong electrolyte, second is weak electrolyte. When I am saying strong electrolyte,
इसका मतलब क्या है? They will be completely ionized or 100% ionized. Now I'm giving you a typical list. This is very important list. बार बार इसको revise करते रहोगे. I'm giving you some acids which are considered to be strong acids. Like इनऑर्गेनिक के जो एसिड्स है जो अपने काम के, मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली तुम्हारे काम आएंगे. HClO4, ये सब तो काम आने वाले, ये सब काम आने वाले. इसको तुम नहीं भी रख सकते हो, चलेगा ये. लेकिन HClO4, HI, HBr, HCl, HNO3, H2SO4, these six तो पक्के से याद रखना है. ठीक है, these are the six acids जिनको तुमको याद रखना है. CF3SO3H is sulfonic acid which is coming from organic chemistry. एक और होता है स्क्वायरिक एसिड बोलते हैं. सफिशिएंट एनफ एसिडिक स्ट्रेंथ होता है बट एज अ डाई बेसिक एसिड. ओके, तो उसकी बात यहाँ पे नहीं करने वाले हम लोग. उसके क्वेश्चंस आएंगे तो डाई बेसिक एसिड की तरह उसका के वैल्यू दिया रहेगा, तो वो एक डिफरेंट मैटर हो जाता है. राइट नाउ वी नीड टू फोकस ऑन दीज एसिड जो मैंने अंडरलाइन किए हैं. HClO4, HI, HBr, HCl, HNO3, H2SO4. H2SO4 is also having a special case. रिसेंटली उसको इन्होंने पूछा भी, हम लोगों ने कई सालों से ये सब हम लोग कवर करते रहे. H2SO4 का स्पेशल केस क्या है, दैट आई विल डिस्कस आफ्टर केस नंबर 9 and 10. बट राइट नाउ इफ दे आर गिविंग यू दीज काइंड ऑफ एसिड्स ना, कोई भी इसमें से एक एसिड दे देगा, तो विल बी assuming that they are going to be 100% ionized. Matlab, if I am having 1 mole of HCl, it will give you 1 mole of H plus and 1 mole of Cl minus. Like that we'll be writing. So when I'm talking about strong electrolytes, what type of ionization they'll be showing in solution? So like if I write HCl aqueous, so this is strong electrolyte and this is acid, so this will be called strong acid. So strong acids are acids which are strong electrolytes. Okay, so this is strong acid. तो यहाँ देखो मैंने एक single arrow दिया है, one sided arrow, and we'll be writing H plus aqueous plus Cl minus aqueous. What does it mean? There is nothing called HCl aqueous undissociated present in the solution. It will never be present. So that's one part. वैसे किसी base को लेते, I'm again giving you important list of the bases. I'll underline the important bases जो तुमको बहुत ही frequently questions में दिखेंगे. NaOH, KOH, BaOH twice. These are three strong bases जो बहुत ही frequently question में देखेंगे. Otherwise, these are the list of compounds. These are the hydroxide which are considered to be strong bases. These are, देखो पहले 5 जो दिख रहा है वो ग्रुप 1 के दिख रहे हैं ना. Periodic table में ग्रुप 1 के hydroxides are strong bases. ग्रुप 2 में normally we consider calcium hydroxide के नीचे, like calcium, strontium and barium hydroxides को we are considering strong bases. Now what about the salts? मैंने लिखा all salts. किसी ने लिख दिया NH4Cl, that is a salt, it will be considered to be strong electrolyte, it will be considered to be 100% ionized. So like if I have to write NaOH, I'll write it will be ionized completely again, and it will be giving you Na plus aqueous plus OH minus aqueous. Similarly, if someone is giving you any salt like NaCl bhi de diya, NaCl aqueous is completely ionized to give you Na plus aqueous and Cl minus aqueous. Similarly, I can take any salt, like if I give you CH3COONA, it is actually CH3CO minus Na plus. Then it will be giving you CH3CO minus aqueous, acetate ion plus sodium ion, Na plus aqueous. Similarly, if I give you NH4Cl, again this is a salt, and this will be giving you NH4 plus in solution. Whatever is in solution, उसकी bracket में देखो aqueous I am writing है ना. So if anything is written with aqueous, it means it is in solution. So in solution, all the salts, if nothing is mentioned about the degree of ionization, we consider all the salts to be strong electrolyte. So these are salts in solution. This is strong base, and this is strong acid. Any doubt up to this point? Any doubt? तो ये कहानी थी स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, स्ट्रॉन्ग बेसिस की एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स. all the salts are considered to be by default if they have not mentioned. Sometimes they mention कि चलो ये 90% ionized होगा, 85% ionized होगा, then we need to take the partial ionization, we cannot take the complete. But whenever we are taking this complete na, it will be a complete arrow directed towards one side, left to right. Is it okay? Any doubt in this part? So now
Whenever you are having a strong electrolyte in solution, because it is completely ionized, there is nothing called undissociated or unionized form of this electrolyte, है ना? And that's why there is no equilibrium established. तो यहाँ पर तो कोई equilibrium आएगा ही नहीं. There is no equilibrium established for strong electrolyte in solution because they are 100% ionized, and that's why we are saying no equilibrium is established between the unionized form and the ionized form. In fact, like I told you, unionized form doesn't exist in solution. NaCl undissociated बचेगा नहीं. It will be completely ionized to give you Na plus and Cl minus. If I'm taking 1 mole of NaCl na, so it will be giving you 1 mole of Na plus, 1 mole of Cl minus. All of them will be present separately. They will not be associated, not in the form of lattice, है ना? Crystal के form में रहेंगे नहीं. They will be completely ionized. So that's one part. So that means this chapter is in fact not even about strong electrolytes, but ऐसा नहीं कि strong electrolyte आने वाली नहीं है. In fact, if you see case number 1 and 2, I'll be talking about strong acid and strong base. Salt के case में भी there will be one case in which we'll be talking about these kind of salts which are NaCl, CH3, CONA, NH4Cl. ये सब आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, but whenever they will be coming ना, they are not going to be achieving the equilibrium state. उनका आयनेशन को हम लोग equilibrium नहीं दिखाएंगे. ये एक कहानी होगी. Now we are moving to weak electrolyte. This chapter is mainly about weak electrolytes. What kind of electrolytes will be weak? Anything which is not strong, है ना? सिंपल सी कहानी है. तो जो ऊपर मैंने लिस्ट बताई है वो अगर याद है तो उसके अलावा जो बच गया वो सारा का सारा वीक है. Is it okay? So that's why what I'm saying, whatever is not 100% ionized, whatever is partially or less than 100% ionized will be called weak electrolyte. And whenever we are having some weak electrolyte, if is present in solution, they will be having partial ionization, and the unionized form and the ionized form will be having an equilibrium. Like if I give you any acid which is not strong, if I give you acetic acid, it is not called strong acid, it is considered to be weak acid. So that's why देखो sign change हो गया. Reversibility का sign we are getting, and that's why we'll be writing they are going to give you some ions but not 100% ionized. So it will be giving you H plus, it will be giving you acetate ion, but because it is having reversibility, it will have an equilibrium constant. For any acid, equilibrium constant is represented as Ka. A subscript में लिखते हैं, that is representing the equilibrium constant for acid. So this will be equilibrium constant of weak acid CH3COOH. वैसा if I am having some weak base, like if I give you NH4OH, it is considered to be a weak base. It will not be completely ionized. So it will give you NH4 plus aqueous plus OH minus aqueous. But because it is having reversibility, an equilibrium will be established. So if equilibrium is coming, so equilibrium constant will be there. तो इसके लिए हम लोग basis के लिए we write Kb. Kb of NH4OH is equilibrium constant for the ionization of NH4OH. Is it okay? Any doubt? तो एसिड के इक्विलिब्रियम को वी कॉल इट के ऑफ एसिड, बेस के इक्विलिब्रियम को वी कॉल इट केबी ऑफ बेस. Greater the value of K of acid, more will be its acidic strength. Greater the value of Kb of a base, more will be its basic strength. Okay. Any doubt up to this point? Now, like I told you, after covering start ke 10 cases and then salt hydrolysis and buffer solution, now we'll be entering into a new section which will be called solubility of sparingly soluble salt. अब वहां क्या होता है, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्ट ओनली, बट व्हाट हैपेंस ना, जब भी हम उनका सॉलिड पार्ट डिसॉल्व करेंगे ना, ओनली पार्ट ऑफ इट विल गेट डिसॉल्व एंड दैट विल बी कंप्लीटली आयनाइज्ड इफ नथिंग इज रिटन. But all of them will be all of them will be dissolved. That is not true. So like if I'm dissolving AgCl na, 1 liter, I am telling you the data, it will be having only 10 raised to minus 10 mole. Only that much will be dissolved. बचा हुआ जितना भी तुमने ऐड किया ना, सबका सब नीचे जाएगा, बॉटम पे जाके बैठ जाएगा. एंड विल से दैट कि दिस काइंड ऑफ सॉल्ट्स आर कॉल्ड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स. उनके लिए क्या होता है ना, बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीटली 100% डिसॉल्व्ड. अगेन बी केयरफुल अबाउट द वर्ड आई एम सेइंग. आई टोल्ड यू अर्लियर, salts in solution are 100% ionized. Now I am saying that if I am having a sparingly soluble salt, it is not 100% dissolved. So some part will remain as solid undissolved form, and the remaining part which is dissolved will be completely ionized. Such kind of salts are called sparingly soluble salts.
For these salts also you'll be getting equilibrium, but that equilibrium will be in between the solid undissolved form and the ions which are dissolved in the dissolved form. Like I told you, AgCl solid, this is solid undissolved form. And these are ions from dissolved forms. Dissolved form. And for such type of equilibrium, again we need to define some equilibrium constant. This type of equilibrium constant is called solubility product, जिसकी बात like I told you we'll be talking about this one later on. जब हम लोग after something called buffer solution we'll cover that ना, उसके बाद we'll talk about this section. ये जो मैंने बोला ना Ka और Kb, this is called ionization or dissociation constant simply, or dissociation constant. Again, be very careful about the words. Degree of dissociation is alpha. Dissociation constant is K. So be very careful about the word. Again, this will be of acid, and like Kb is ionization or dissociation constant of base. Any doubt up to this point? क्योंकि इसके आगे कहानी मैथमेटिकल हो जाए. Any doubt up to this point? Everything clear? Chalo. Now we'll be talking about, like I told you, I have just mentioned a word called degree of ionization or degree of dissociation. Normally बोला करते हैं उसको. इसी chapter में यहाँ पर, because we are going to talk about electrolytes which are going to give you ions, that's why that same term which was earlier called in the previous chapter, it was called degree of dissociation. This time we'll be calling it degree of ionization. What is degree of ionization? Again, it is the fraction of given electrolyte which is ionized. So now, if I'm talking about degree of ionization, again same definition, but in different words. Now we are using the word ionization, and that's why we are saying it is the fraction of moles of consumed out of total. Consumed मतलब ionized लिख दो यहाँ पे. Out of total moles available in the given reaction or solution. ठीक है? That is called degree of ionization. Consume का मतलब reaction में consume करने का मतलब क्या है? वो ionize हुआ है ना, that much. Okay. So like if I'm having strong electrolyte, because it is 100% ionized, and that's why we are saying it is having alpha का value 1. 1 is nothing but 100%. This is 0. Non-electrolyte, it is not going to give you any ion. So that's why we'll say it is 0% or 0 simply. But if I'm having any weak electrolyte, it will have alpha ka value in between 0 and 1, and it is going to be a one of the mathematical constraint. If I'm getting a quadratic equation जिसमें alpha के दो values आने वाले हैं, any value which is more than 1 or less than 0 will be rejected, है ना? It will be excluded because alpha can never be greater than 1, it can never be less than 0. So any value which is in between 0 and 1 can only be acceptable. If I'm getting any value which is more than 1 or less than 0, I'll reject that. And that becomes an important constraint, mathematical constraint. तो कभी कभी ऐसा रहेगा, अल्फा का वैल्यू तुम सॉल्व करने जाओगे, you'll be getting a quadratic equation. So you can have two possibilities of the value of alpha, where we have to take a decision कि अल्फा का वैल्यू 1 से ज्यादा आ रहा है, तो I'm going to exclude that, I'm going to reject that value. Any doubt up to this point? अब इसी में मान लो if I am having, तो फॉर्मूला वाइज हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मूला वाइज बहुत ही सिंपल सा आएगा कि if I मान लो C मोल्स पर लीटर मैंने डिसॉल्व किया है, उसमें से X मोल इज आयनाइज्ड, तो X अपॉन C will become the value of alpha. So if I am talking about mathematical formula for alpha, so I'll say यहाँ पे X is moles of electrolyte ionized. This is total moles of electrolyte dissolved. And that's why what we are saying, that if alpha is X upon C, that means X की जगह we can write C alpha है ना, पर लीटर लिख दो, क्योंकि हम यहाँ पर हम लोग नॉर्मली कंसंट्रेशन में ही बात कर रहे होंगे.
So per liter, if we have dissolved C moles of electrolyte and out of C moles X moles are ionized, then X upon C is alpha. So X is nothing but C alpha है ना. तो मान लो कोई भी electrolyte like if I am giving you some acid which is weak acid and weak acid की निशानी होगी कि यहाँ पर we will be getting the reversibility का sign. तो ये देखो कहानी कैसी चलेगी. It will be like it will have some equilibrium constant जिसको मैंने Ka of Ha लिखा है. We will say that कि initially without any ionization it will go in this way only if it is a weak electrolyte. Obviously K का value दिया हुआ है and if that value is less than 1 तो वो एक weak electrolyte है. Otherwise they don't give you the value of K if it is a strong like HCl HBr के लिए they will never give you the K का value. Even if they are giving it ना it will be more than 1 तो we'll understand that कि it is strong electrolyte. तो मान लो start में ये C था ये 0 and 0 था तो at equilibrium we will say now because C में से C alpha कंज्यूम हुआ है तो बचेगा C minus C alpha which is C into 1 minus alpha है ना. This will be C into 1 minus alpha. तो ये हो जाएगा C alpha, ये हो जाएगा C alpha and at equilibrium we'll write K equals Q. K will be equal to H plus at equilibrium raised to 1, A minus at equilibrium raised to 1. यही जो chemical equilibrium में कर रहे थे वही we are repeating it. But now we have got a different terms है ना. This is C alpha, this is C alpha, this is C into 1 minus alpha है ना. तो देखो यहाँ से जैसे like I told you ना you'll be getting many times quadratic equation. तो we are getting alpha का value. Alpha में quadratic equation दिख रहा है ना. So this kind of calculation we are going to do frequently. Any doubt in this part? ना अभी तो मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट लेकर उसके आयनेशन को दिखा है उसका कैलकुलेशन दिखा है कि हाउ टू डू द कैलकुलेशन. इसके बाद वापस से हम लोग करेंगे. विल बी हैविंग केस 1 2 में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे. द मोमेंट वी आर एंटरिंग इनटू केस नंबर 3 एंड 4 विल बी टॉकिंग अबाउट वीक एसिड्स एंड वीक बेस. ओके विल टॉक अबाउट दैट. बट राइट नाउ लाइक आई टोल्ड यू जब हम लोग पानी में किसी को डिसॉल्व कर रहे हैं एंड देन इट इज गिविंग यू आयन इफ इट इज कंप्लीटली आयनाइज्ड we are calling it strong electrolyte. If it is not completely ionized we are calling it weak electrolyte. If it is not ionized at all then we are calling it non electrolyte. सब कुछ पानी में घोल रहे हैं तो let's first understand about what is the property or what is the characteristic of water itself है ना. तो सबसे पहले we'll talk about water के नेचर को समझेंगे and then we'll be talking about again कि water में क्या डिसॉल्व कर रहे हैं तो उससे क्या मिलने वाला है. ठीक है. तो पहला अपना सेक्शन जो मैथमेटिकली बनने वाला है we'll be talking about something called self ionization or it is also called auto ionization or auto protolysis of water itself. When we are talking about water na considered to be extremely weak electrolyte. Three idiots देखा है क्या? Three idiots देखा है? देख लो अच्छी मूवी है. मतलब ये कभी मौका मिले अभी मत देखना बट कभी मौका मिले देख लो. अच्छी मूवी है. उसमें स्टार्ट में यही बोलता है प्योर वाटर के बारे में तो नहीं बोला. प्योर वाटर इज extremely weak electrolyte but salt water is a good electrolyte of electricity. तो एक बंदे को करंट लगाना होता है तो वो तार लगा के उसमें वो यूज्ड टू पी देयर तो उसको करंट लग जाता है. इस तरह का एक लाइन बोला हुआ है स्टार्ट में. बट वी नो दैट सॉल्ट वाटर और सॉल्ट वाटर विद any electrolyte will become a good electrolyte but water itself if I am having pure water it is extremely poor or weak electrolyte. ये जो extremely poor और weak electrolyte है ना but it is still electrolyte है ना. मैंने ये नहीं बोला कि it is non electrolyte. इट इज स्टिल इलेक्ट्रोलाइट. तो इसके आयनाइजेशन को हम लोग ऐसा बताते हैं H2O गिविंग H प्लस एंड OH माइनस. इसका एक और तरीका हो सकता है. वी कैन ऑल्सो राइट H2O liquid plus another molecule of H2O liquid is going to give you H3O plus liquid plus OH minus liquid. Why we are writing that? Chemical bonding में जब पढ़ाया था H plus. What is H plus actually? Anyone? What is H plus? When we say H plus, what does it mean? Proton. Proton simply है ना. Which is having extremely H plus is what? हाइड्रोजन था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हाइड्रोजन के पास there was one proton in nucleus and one electron outside the nucleus है ना. इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो it is simply a proton which is having extremely small size. When I am having any ion, cation की बात मैं कर रहा हूँ. कैटायन के लिए याद करो एक टर्म मैंने फजांस रूल में पढ़ाया था. पोलराइजिंग पावर की बात की थी. तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन की बात जब की थी ना तो that was proportional to charge upon size of cation है ना.
Now charge is not very high. Cation के लिए H plus के लिए charge is only +1, so it is not high. But because it is only proton, only the hydrogen का nucleus, it is excessively small, and because of that reason, its polarizing power is very high. So in water, it will never be in pure free H plus. It will always be associated with some molecules. So in general, we write that ki H plus in water, H plus in water will be will always be in associated form. So in general, so we write that H2O NH plus, और इसी को लिखा हुआ रहेगा, मान लो पूरा डिटेल में लिख देगा था H2N+1O, उसके ऊपर प्लस लिख देगा. So that like I'll give you an example. For example, sometimes we also write, for example, we write एक ऐसा देखते हैं H9O4+. इसका मतलब क्या हो गया? We have got 4 molecules of water associated with 1 H plus. या फिर we can write H3O plus, which is the simplest representation. Like one water molecule is associated with 1 H plus. This is the simplest representation. And that's why whenever they are writing H3O plus, na, treat it as H plus only. Okay, don't get confused कि अब ये नया क्या आ गया. It is simply H plus, which is always be found in associated form. That's why we are writing that. The point was, like I told you, H plus ions जो भी आएगा ना, this will never in a free state. That's why we are writing it in this form. So I'm writing that point. Due to very high polarizing power, I told you. तो ये तो मैंने बताया कि जैसे ये भी होता है, तो यहाँ पर there are 4 water molecules associated with H plus. So simplest representation is H3O plus, and that's why we can also write it like this. अब ये जो रिएक्शन लिखा ना मैंने, इसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहा होगा ना. अगर इसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो फिर इसके लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं. सो इफ आई एम राइटिंग H2O liquid giving H plus aqueous plus OH minus aqueous, इसका जो K इक्विलिब्रियम है ना, दैट इज एक्सट्रीमली लो, है ना. इट इज मच मच लेस देन 1, बहुत ही छोटा है. तो अगर विदाउट ये मैंने लिखा ना, विदाउट आयनाइजेशन, तो इनिशियल लिख रहा हूं, जिसका मतलब है दिस इज विदाउट आयनाइजेशन. इफ आई कंसीडर दैट कि इसका कंसंट्रेशन वाज C, विल टॉक अबाउट दैट आल्सो. एक बार तो जेई ने यही पूछ दिया था, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर. एनीवन हैविंग एनी आंसर? Considering density to be 1 gram per ml, what will be the molarity of 55.55. 55.56 if you round it properly, है ना. तो 55.5555 आता है. This will be 55.56. We'll talk about that also. Again, I'll tell you how it is coming, because sometimes they'll be changing the density also. Like electrochemistry में मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जिसमें density will be different from 1 gram per ml, and that's why we'll talk about that also. But right now, after ionization or at equilibrium, we'll write after ionization or at equilibrium. मान लो इसका कुछ अल्फा था, तो C अल्फा विल बी कंज्यूम्ड, ये तो सीखा है. This was becoming C into 1 minus alpha, so this will become C alpha, this will become C alpha. Now, like I told you, this is extremely low. I'll tell you the number. अभी थोड़ी देर में साफ साफ पता चलेगा नंबर क्या है. So this can be written as C only ना. अल्फा अगर मैं बोलूं 0.000000001, ऐसा कुछ बोल दूं, तो सिंपली वी कैन से ना कि 1 माइनस अल्फा को काय को लिखने का 1 लिख दो ना, इससे अच्छा 0.9999999999 इतना बोलोगे, इससे अच्छा 1 बोल दो. तो वी कैन कंसीडर दैट कि इट इज अप्रोक्सीमेटली C, एंड दैट्स व्हाई अभी जो एट इक्विलिब्रियम पे हम लोग पहले लिख रहे थे ना, नाउ इफ आई राइट व्हाट वी आर राइटिंग एट इक्विलिब्रियम, वी कैन राइट दिस K इक्विलिब्रियम, व्हाटएवर विल बी द वैल्यू, is equal to H plus into OH minus upon H2O, है ना. ये लिख सकते हैं. Now, because H2O का concentration we are treating it as a constant, तो constant H2O का concentration लिया और constant K equilibrium लिया, तो दोनों को मिला के एक नया constant मिल जाएगा ना. तो we can write K equilibrium into H2O will be equal to H plus into OH minus. Now, यही जो दो constant हैं, इनको मिला के एक नया constant बनाया गया, and that is called KW. So we can write at equilibrium
H plus into OH minus will be equal to Kw, where, like I told you, Kw is nothing but where Kw is nothing but K equilibrium जो start में था that much into H2O. Now, with density of water equal to 1 gram per ml, we write the C का value जो है ना, concentration of H2O जो आता है ना, that will be 1000/18 है ना. ये कैसे आया है? If I am having density this much, तो we'll write 1000 ml, which is 1 liter, is having 1 gram, 1000 gram water है ना, and 1000 gram water का मतलब है 1000/18 gram water, mole water है ना. And these many moles in 1 liter is the molarity of water, and that's why we are writing this one, which is very close to 55 point. I'll write 56 with proper round off. So this much will be the concentration of pure water, or in any aqueous solution also. If they're asking, concentration of water kitna hai, we always write 1000/18 if nothing is mentioned about density of water. Any doubt up to this point? ये एक नया टर्म बन गया अपने पास KW. इसका एक नाम भी है, उसकी बात करेंगे, बट अभी तक मैथमेटिकली व्हाटएवर इज नॉट क्लियर टू यू, जस्ट आस्क. इफ यू हैव एनीथिंग नॉट क्लियर, जस्ट आस्क. Sir, how do we know that the degree of dissociation is very small? The degree of ionization is very small. ओके, वाटर के लिए इट इज अ फैक्ट है ना. ये तो अभी अपने को सीखना पड़ेगा कि वाटर इज एक्सट्रीमली पुअर इलेक्ट्रोलाइट. इट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड. नंबर वाइज लाइक आई टोल्ड यू, अभी आई टेल यू द नंबर ऑफ KW का वैल्यू कितना होता है. लाइक 25 डिग्री से पे KW का वैल्यू इज 10⁻⁻14. अभी 10⁻⁻14 में और डिवाइड कर दो 1000/18 से, और भी छोटा हो गया ना, है ना. तो वो तो बहुत ही छोटा हो गया, तो K इक्विलिब्रियम तो डेफिनेटली बहुत छोटा हो गया. Yes, sir. ओके, दैट्स वन पार्ट. नाउ इसके आगे एक और चीज सिखा देता हूं मैं, एंड दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ साइंस. व्हाट कैन बी इग्नोर्ड और नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू व्हाट? तो रूल ऑफ नेग्लेक्शन इन साइंस. क्योंकि अभी कहीं तो एक लिमिट डालना पड़ेगा ना कि किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं. तो इट वाज विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट कि इफ आई वांट टू इग्नोर और नेग्लेक्ट बी इन कंपैरिजन, पहली बात तो कभी भी किसी को एब्सोल्युटली इग्नोर नहीं कर सकते. इफ आई से x का वैल्यू, if I write x/1 minus x is some number, and then if I say x is much less than 1, तो मैं x को 0 ऊपर नहीं लिखूंगा, क्योंकि उससे क्या होगा ना, इक्वेशन ही खराब हो जाएगा पूरा, है ना. तो whenever we are doing some neglection, it is always done in comparison to, है ना. So if I am writing one quantity can be neglected only in comparison with, in comparison to another quantity. ठीक है. तो पहली बात तो यह है कि कभी भी a प्लस माइनस बी रहे तो ही हम लोग b को नेग्लेक्ट करने की बात करेंगे a में. Absolutely b will never be neglected. Like if I am having b upon a plus b, I will never be neglecting b at the numerator because b is not in comparison to anything. So like another thing is n, or I'll write a quantity b can be neglected in comparison to a or another quantity a if b is less than equal to 1/10 of a. For example, 1 plus minus x can be written as 1
if x is less than equal to 0.1. Is it okay? So you'll find that whenever we are getting that, अभी ऊपर मैंने बोला था ना 1 माइनस अल्फा आया था टर्म है ना, तो whenever we'll be finding ना कि अल्फा का वैल्यू 0.1 से कम है, we can always write 1 plus अल्फा या 1 minus अल्फा की जगह we can write directly 1. Is it okay? Any doubt? तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग जो पूरे चैप्टर में हम लोग यूज करने वाले हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ व्हेनेवर आई विल बी डूइंग सम थिंग ना कि मैं बोलूंगा केस 1 अगर ऐसा हो तो ये करो, वैसा हो तो वो करो, देखोगे उसका बेसिस यही बन के आएगा कि ऐसा करो क्यों करो, तो पता चलेगा कि आई एम फॉलोइंग दिस रूल ओनली. विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो इन फ्यूचर, बट राइट नाउ लाइक आई टोल्ड यू, अभी मैंने क्या बोला, मान लो अगर ये कंप्लीटली अगर ये आयनाइज होता और मैंने इसको सॉल्व भी किया होता, अगर अल्फा 1 से कम रहा होता ना, तो देखो पूरा वैल्यू अल्फा का कितना आता तो पता चलेगा कि वो 1 से बहुत छोटा आने वाला है. अब ये तरीका भी क्या है सॉल्व करने का, अभी देखो बिना सॉल्व किए हुए मुझे कैसे पता कि अल्फा कितना आएगा, है ना. तो इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा जो है ना वो नेग्लेक्ट होता तो क्या आता अल्फा का वैल्यू. तो देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा को मैंने यहाँ के लिखा था, के इक्विलिब्रियम लिखा था ना. अभी इसी में क्या होगा, अगर मैं इसको नेग्लेक्ट करूं तो अपने पास क्या आ रहा है, देखो सी अल्फा स्क्वायर इज के इक्विलिब्रियम, फिर मैं लिखता अल्फा इज अंडर रूट के इक्विलिब्रियम बाय सी. अब इसका तो कुछ तो वैल्यू आएगा ना. इफ दैट कम्स लेस देन 0.1, डेफिनेटली इट विल कम लेस देन 0.1. जैसे वो लेस देन 0.1 आएगा कहूंगा मैं कि हाँ ठीक है, अल्फा का वैल्यू 1 के सामने इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज इग्नोर करने से जो वैल्यू आ रहा है डेफिनेटली दैट इज लेस देन 0.1. तो इट इज वैलिड. अगर वो नहीं आता तो फिर हम लोग नहीं करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बेसिस. जो मैंने बोला सबसे ज्यादा बच्चे जो डिफिकल्टी फेस करते हैं आयनिक क्रम में, ये सर ने अपने मन से क्यों कर दिया अल्फा लेस देन 1 होगा, हाउ डू आई नो कि अल्फा को इग्नोर करना है कि नहीं करना है. तो दिस इज द वे वी विल ऑलवेज फाइंड दैट कि मान लो अल्फा को नेग्लेक्ट किया होता तो अल्फा का वैल्यू कितना आता. इफ इट इज एक्चुअली कमिंग लेस देन 0.1 तो मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है, अल्फा को 0.1 से लेस लेना इज वैलिड स्टेटमेंट. ओके, तो ये चीज हम लोग बार बार इस चैप्टर में फॉलो करने वाले हैं. एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? नो, जैसा ऊपर मैंने सिखाया अभी कि पानी रहे, प्योर वाटर रहे, इन प्योर वाटर और इन एनी aqueous solution, because H2O गिविंग H plus and OH minus का इक्विलिब्रियम हमेशा ही फाइनली आ ही जाएगा. So that's why we'll always write this term कि Kw will be equal to H plus into OH minus. So देखोगे आगे फ्यूचर में whenever we'll be having, मान लो OH minus का कंसंट्रेशन पता है ना, and if they are asking you H plus बताओ कितना होगा, I'll always be writing Kw upon OH minus is H plus. तो कभी भी फ्यूचर में if I am having OH H plus पता है, OH minus निकालना है, I'll write OH minus is Kw upon H plus. या पता है हमको OH माइनस पता है और H प्लस पता करना है, तो आई राइट KW अपॉन OH माइनस विल गिव यू H प्लस. ये हमेशा हम लोग यूज करेंगे इन फ्यूचर इन एनी एक्वस सॉल्यूशन, विल ऑलवेज यूज दिस वन. एनी डाउट? अभी मैं वापस यहां से आ रहा हूं, जो ऊपर मैंने किया था दिस सेक्शन आई एम रेफरिंग. यहाँ पर ये जो KW है ना, इसको नाम दिया गया है. दिस इज कॉल्ड सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट और इट इज आल्सो कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. ये जो मैंने नाम लिखा है ना, दिस इज कॉल्ड सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. वाई सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट? बिकॉज वाटर जो आयनाइज हो रहा है उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उससे ये रिलेटेड, इट इज नॉट एग्जैक्टली सेम, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू H2O का कंसंट्रेशन है, but it is related to that. And why we are calling it ionic product of water? Because it is equal to, at equilibrium obviously it is equal to the concentration of ions given by water, है ना, and that's why we are calling it ionic product of water. तो कुछ जो important results यहाँ पे आएंगे वो हम लोग देख लेते हैं. So like I told you, किसी भी केस में if they are having
KW का वैल्यू तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा ये बताओ तो मेरे को, ये फॉरवर्ड जो है वो एंडो है कि एक्सो है? इट इज एंडो और एक्सो? H2O giving H plus and OH minus, is it endo or exo, this reaction? Ishan, No. endo or exo? And Okay, some of you are saying exo, some of you are saying endo. अभी याद करो, एक तो पहली बात तो इन्फॉर्मेशन पता रहे तो बहुत अच्छी बात है, बट इफ यू रिमेंबर, जिनको याद नहीं है वापस जाके रिवाइज करोगे, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा था ना, एंड enthalpy of neutralization में we are having the reaction H plus plus OH minus giving H2O, और उसका डेल्टा H minus 13.7 kcal लिख देते हैं ना, और minus 57.3 किलो जूल। If H plus plus OH minus giving water is having negative delta H, तो H2O giving H plus plus OH minus will be having positive delta H, same value है ना। So that's why we are writing that forward is endo and backward is exo. अगर फॉरवर्ड एंडो है तो मैंने अभी जस्ट केमिकल ट्रिम में फिनिश करते के टाइम पे बोला था कि अगर फॉरवर्ड एंडो है ना तो टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है ना, तो अगर के इक्विलिब्रियम बढ़ जाए तो के डब्ल्यू भी बढ़ेगा, एंड दैट्स व्हाई वी हैव गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट के डब्ल्यू इज नथिंग बट इट इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. So that's why if I am having Kw का वैल्यू, इट इज गोइंग टू डिपेंडिंग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट थिंग. एंड नाउ इन व्हाट मैनर इट विल डिपेंड, इट्स वैल्यू विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एज सेल्फ आयनाइजेशन इज एंडोथर्मिक. और वो चीज कैसे वेरी करेगी, तो इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने पढ़ा था लॉग, मान लो Kw2 आता है, Kw1 आता है, विल राइट डेल्टा H नॉट आयनाइजेशन upon 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2, है ना, यही तो रिलेशन था दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का Kw का रेशियो में वाटर का कंसंट्रेशन विल गेट कैंसिल्ड, है ना. इज इट ओके? एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू हैव this relation whenever it will be required. Normally ये required नहीं होता, they give you the value, but normally this is an important mathematical relation, but qualitatively we can say its value is going to increase if you are increasing the temperature. Any doubt in this part? Now, one value, if required, they'll never give you, and that value is at 25 degrees C. If nothing is written about the temperature, we'll consider 25 degrees C, which is considered to be the room temperature. So, at 25 degrees C, you need to know that its value is 10 raised to minus 14. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक आई टोल्ड यू, किसी भी एक्वा सॉल्यूशन की बात हो या प्योर वाटर की बात हो, तो वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि KW विल बी इक्वल टू OH minus into H plus or H plus into OH minus. But if I am talking about pure water neutral solution, pure water में तो जितना H plus बनेगा उतना ही OH minus बनेगा, है ना. In pure water, if I am saying that H plus and OH minus both of them are going to be formed by water only, and दोनों का कोफिशिएंट देखो 1 and 1 है. And that's why if the coefficient is 1 and 1, they will be equally produced. यहाँ दिख रहा है ना, C alpha ये बना है तो ये भी C alpha बना है. And that's why we'll say because H plus and OH minus both are equal in pure water, not in any solution. In any solution मैंने बोला है, this is the relation we are going to use. But if I am talking about particularly for pure water, we'll say that H plus and OH minus दोनों बराबर होंगे. And अगर दोनों बराबर होंगे तो दोनों का वैल्यू रूट KW होगा, because उनका मल्टीप्लीकेशन इज KW, है ना. Is it okay? Any doubt in this part? Now, if someone is asking pure water में अल्फा बताओ कितना हो, so if I am talking about अल्फा कितना होगा, तो देखो यहाँ क्या लिखा था, KW was H plus into OH minus, और अभी के लिए दोनों. So in pure water, if I am talking about KW is H plus into OH minus, and दोनों बराबर हैं, we can write C alpha का whole square is equal to KW, which means alpha will be root KW upon C. At 25 degrees C, we can write this will be 10 raised to minus 7 upon, this was 1000 by 18 है ना, approximately. तो ये देखो ये वैल्यू जो है ना, this is at 25 degrees C. Now I'm being specific with the number. Now this is 18 into 10 raised to minus 10, or we can write 1.8 into 10 raised to minus 9, but only at 25 degrees C. This is the value. Now see this number. ये नंबर क्या बता रहा है?
only 18 molecules out of, if I'm saying alpha is 18 into 10 raised to minus 10 na, or a 1.8 into 10 raised to minus 9, then what does it mean? It means out of these many molecules, only 18 molecules are ionized. Is it okay? Any doubt? So we can practically ignore H plus or OH minus coming from water. And is it okay? Any doubt up to this point? अभी वाटर में चीजों को डिसॉल्व तो करेंगे, बट उसके पहले दे कैन सम टाइम टॉक अबाउट ionic product or self ionization constant of some other substances also. तो जैसे एक दो क्वेश्चन उसके भी करके देख लेते हैं. So now if I am having ionic product of other substance, वो क्वेश्चन के थ्रू ही बताता हूं मैं, इसमें कुछ ऐसा अलग से थ्योरी नहीं बताने की है. ऑब्वियसली विल बी सेइंग कोई भी सब्सटेंस जो है ना, वो जो कैटायन एंड एनायन दे रहा है, इसके लिए हम लोग बोलेंगे आयनिक प्रोडक्ट will be equal to cation given by substance into anion given by substance है. यही थ्योरी है, बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं. At equilibrium obviously, at equilibrium, I'll write ionic product of the given substance will be equal to cation of it into anion of it. जैसे मान लो बोल दिया तुमको आई एम हैविंग NH3 जो है ना, दैट इज गिविंग यू ions, so that is giving you NH4 plus NH2 minus. So then we'll say ionic product of NH3 will be equal to NH4 plus into NH2 minus. And उसमें भी like I told you in pure ammonia, ये दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी ना, because they are having same constant. So in pure ammonia if they are asking, then we'll write ये जो वैल्यू है ना, that will be equal to, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, NH4 plus will be equal to NH2 minus, and that will be a square root of ionic product. And जैसे रूट KW बताया था H plus and OH minus को, similarly we can write square root of ionic product will be equal to the cation और anion का concentration in, but in pure ammonia. Pure लिखेगा तो ही, अगर उसमें कुछ मिल गया तो फिर now we cannot say. But right now we are talking about only pure substance. Like I'll give you some questions. एक अमोनिया वाला ही क्वेश्चन देता हूं मैं, then we'll talk about एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेंगे. These are famous question, मतलब किसी भी कोचिंग के मटेरियल में ये तुमको दिख जाएगा. Question like if I give you this question, try to solve this one. Okay, Ronak has got some answer. Anyone else having any answer?
Okay, Suchir has got an answer. Sa has got an answer. Sharang, Rajat, any answer? Sir, I'm solving. Okay, Anshul has got an answer. Taima, Mahak. Yes, any answer? Okay, Rehan has got an answer. Ishan has got an answer. Aditya, any answer? Okay, Rishit has got an answer. Okay, Vivan has got an answer. Pratyush has got an answer. I've got till now I've got two types of answers, A and D. Okay, Udayan has got an answer. So enough time given. Like I told you, if they have given you this self-ionization constant, which is KNS3, which is equal to these two in pure liquid ammonia, I'll say both of these ions will have the same concentration because they are coming from the same source, and the coefficient in that thing was same, and that's why we are writing in pure ammonia. We'll write this NH2 minus or NH4 plus will be having same concentration, and that will be under root K of this NH3, which is equal to 10 raised to minus 15. है ना? But this is not the answer because they have not asked you concentration of NH2 minus ion. It is asking you number of ions. First thing, it is not moles of ions, and that too, this is not, this is per centimeter cube. So now this is actually mole per liter, है ना? But it is asking you per centimeter cube. So we are saying per liter का मतलब है 1000 centimeter cube, है ना? This is having 10 raised to minus 15 moles NH2 minus ion. So now we'll say 1 centimeter cube will have 10 raised to minus 15 upon 1000, but that is also moles of ions, which is 10 raised to minus 18 mole ions. But it is asking you numbers, so we'll say this much into Avogadro number, and Avogadro number we need to use here 6 into 10 raised to 23. So these many ions of NH2 minus, and which is 6 into 10 raised to 5. What is the mistake? जिन लोगों ने उदयन ईशान तुम लोगों ने ए बोला था, what is the mistake? विवान ने भी ए बोला है. केसी को लीटर में कन्वर्ट नहीं. ओके, लीटर में नहीं किया तो अच्छा, हाँ ठीक है. बट इफ यू डोंट डू दैट, अच्छा 1000 सेंटीमीटर क्यूब में ही निकाल दिया, पर लीटर में, है ना? तो वी नीड टू बी केयरफुल व्हाट दे आर आस्किंग, है ना? So next time, so whenever we are reporting the answer, we need to take care of the unit in which they are asking you the answer. They are asking you the answer, or we need to take care of the part कि out of कितना वो पूछ रहे हैं ना, and what they are asking, moles या number, वो भी एक problem होगा. ऐसा तो कुछ दिया नहीं था यहाँ पर option में, but if they are asking you in that manner, तो we need to be careful. Moles पूछ रहा है कि number पूछ रहा है, per liter पूछ रहा है, per centimeter cube पूछ रहा है, because by default the concentration is nothing but mole per liter, है ना? So we need to take care of that. चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये भी फेमस ही है. There is nothing extraordinary in this. Like if I ask you this one,
solve this one. पिछले में किसी को doubt रहेगा तो पूछ लोगे. If you have any doubt, just ask me. In the previous one. Otherwise, आगे बढ़ो और try to solve this question. Okay, we have got an answer. Ionic का answer आ गया. Anyone else? Right now, I'm not saying right or wrong, but anyone else having any answer? Okay, Niranjan has given me some answer. And both of you have got different answers. Okay, Yash has got the answer. Okay, Vivan का भी आंसर आया है कुछ. Ishan has also got an answer. Okay, Anshul has got an answer. Now, see, if they are asking you the percentage of formic acid, they are talking about alpha kitna hai, and that much into 100 will give you the answer, है ना? So alpha, like for pure water, if you remember, for pure water जब हम लोग बोलते थे, then alpha was under root kW by C, है ना? तो वैसा ही यहाँ पर भी प्योर फॉर्मिक एसिड के लिए, दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड और मेथेनोइक एसिड, और प्योर formic acid, we can write alpha will be under root its ionization constant which is given as K upon इसका concentration लेना होगा ना. अभी K का value is given but C का value is not given, that we need to calculate, and they have given you the density. तो जैसा water का मैंने बताया तो वैसा ही for pure formic acid what we are writing,
density is 1.22 gram per cm cube, which means if I'm having 1 liter or 1000 centimeter cube, that will have 1220 gram HCOH, which will be 1220 upon, if you calculate molecular mass, you'll be getting 46. So these many moles of HCOH we have got. 32, 40 now, 46. So these many moles, so 1 liter में these many moles, so this is the value of C. So we'll write C is nothing but 1220 upon 46. And now we have got the K ka value and we have got the C ka value. So we are writing alpha ka value will be under root 10 raised to minus 6 upon, this is 1220 upon 46. So we can write this is actually 46 upon 1220 into 10 raised to minus 3, or we can write 4600, अच्छा परसेंट में पूछ रहा है तो इंटू 100 भी करना पड़ेगा, है ना? तो वी कैन राइट दिस मच विल बी 46 by 1220 into 10 raised to minus 3 into 100%, and that will become 4600 upon 1220 into 10 raised to minus 3%. Now the numbers are roughly approximately पूछ भी रहा है और numbers are exact नहीं दिए हुए हैं, देखो 2468 लिखा हुआ है and point के बाद 2 0 के बाद 3 digits में लिखा हुआ है, तो this will be approximately, देखो ना 1220 का 3 times will be 3660, है ना, 4 times will be 4800, तो roughly you can say it is very close to 4 and not 3, तो 2 तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना, तो we'll be writing this is approximately this much percent, so which is 0.004%. And that's why we need to write answer as B. Is it okay? What is the mistake in A? Ishan, Udayan, Niranjan. Value of C you calculate by concern density, है ना? Like when the density of pure water was 1 gram per ml, so we say that 1000 ml will be having 1000 gram and 1000 gram is having 1000 by 18 moles, है ना? So 1 liter is having these many moles, so this is the molarity, okay? Like that only, we are saying density is 1.22 gram per cm cube. That means 1000 cm cube, which is 1 liter, will be having 1000 times of this, है ना? 1220 gram of H2. Is it okay, Ishan? Now these many grams will have how many moles? So these many upon molecular mass लिख दिया, molar mass है ना, तो 1220 upon 46 moles are present in 1 liter. And molarity का definition क्या है? Moles of that substance upon the volume of the solution, है ना? So that's why we'll be writing 1220 by 46 mole upon 1 liter, and that is this much mole per liter we can write, huh? And that's why this is the value of C. Is it okay? Any doubt? Now, if you see these things, whatever we have discussed so far, na, start से देखते हैं, because we need to talk about the next section. Before going to that section, if you see ना, हम लोगों ने जब इसकी बात की ना, तो you know the value of this thing ना, ये जो आता है ना, this is roughly, if you see this number, this is roughly 1.8 into 10 raised to minus 5 जैसा आता है at 25 degrees Celsius. This is also roughly 1.8 into 10 raised to minus 5 जैसा. If you see, इसके बाद हम लोगों ने KW की बात की, and वहां पर we are getting a number like 10 raised to minus 14 at 25 degrees C. If I'm changing the temperature, it will be going slightly up or down. So if I'm increasing the temperature, the value will be slightly increased. If I'm decreasing the temperature, value will be slightly decreased. But in this chapter, like I told you, I have indicated that many numbers will be in this form. देखो ये 1.8 into 10 raised to minus 9. So you'll be having many numbers which will be coming in this form, which is like a into 10 raised to minus b. ऐसा एक form आएगा in which we are not very comfortable. Now, if you remember my first lecture, like I always talk about that in first lecture कि if I ask you कि मेरे पास जो पेन है उसका जो टिप दिख रहा है उसकी वेट कितनी है, तो you'll be talking about मिलीमीटर में कुछ होगा, रूम का वेट कितना है, इतना फीट या इतना मीटर होगा. Then I ask you दादर से गोरेगांव का डिस्टेंस कितना होगा, तो you'll be telling me some किलोमीटर, है ना. Then I'll ask you अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना होगा, you'll be saying some light years. I never asked you the unit, you changed it by yourself, and then I ask you why you are changing the unit by yourself.
तो तुम्हारा आंसर बहुत कुछ होता है और बाद में मेरा आंसर होता है कि अपन बड़े आलसी हैं, अपने को डिफिकल्ट नंबर जमते नहीं है। तो इफ आई स्टार्ट सेइंग ना दादर से गोरेगांव का डिस्टेंस इन मिलीमीटर, तो मैं बोलते बोलते मैं भी भूल जाऊंगा, सुनते सुनते तुम भी भूल जाओगे। तो अपन आलसी लोग हैं, वी नीड कंफर्टेबल नंबर। So if I'm having some number like 2.5 into 10 raised to minus 8 या फिर 1.25 into 10 raised to minus 6, ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन इसका बड़ा डिफिकल्ट, 10 raised to minus 6 ऐसा कुछ मैं लिख दूं, तो these numbers are very difficult to deal with or handle with, these numbers. It will be very difficult and that's why I always tell you कि तुमने क्या किया था जब भी मैंने अलग अलग डिस्टेंसेस पूछे थे ना, तुमने अपनी यूनिट चेंज कर दी थी, है ना, यू हैव चेंज द स्केल ऑफ द यूनिट, है ना। जो मीटर में निकालने में कंफर्टेबल था उसको मीटर में बोला ताकि अपना आंसर जो है ना वो 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ आ जाए। वैसे ही जो चीज मिलीमीटर में छोटे नंबर में 1 2 3 4 में आ रही थी उसको उस नंबर में बोला। वैसा ही इफ आई एम गेटिंग दीज काइंड ऑफ नंबर्स ना, इसको इसका चेंज ऑफ स्केल करने का सबसे अच्छा तरीका दिखता है ना, ये 10 रेज टू समथिंग है, तो लॉग लगा लो तो दैट समथिंग विल बी कमिंग आउट ऑफ लॉग, है ना। if I am having 10 raised to minus 8, if I take log of that, then we are getting minus 8, है ना? And if I am writing minus log of that, then I will be getting minus of minus 8. Now it is coming 8. And now we are comfortable with this number, which is 8. Clear a point? And that's why in this chapter also, because we are going to deal with such kind of numbers a lot, and that's why what we are going to do now, we'll be defining a scale which will be giving you such type of number which will be 2 3 4 5 6. That scale is called pH scale. Okay, so we'll be defining pH scale, and it is defined in such a manner so that whenever we'll be dealing with such kind of number na, where we are going to deal with a into 10 raised to minus b जैसा कुछ, तो फिर वो इसको कंफर्टेबल 1 2 3 4 5 या फिर 3.8 2.6 ऐसे नंबर में वापस लेकर आ जाएगा। So when we are defining it ना, it is defined in a particular way. तो वैसे तो जब मैं pH बोलता हूं तो इसे by definition it is minus log of activity of H plus or active mass of H plus. For dilute solutions, we say that active mass is nothing but the molarity. But if it is highly concentrated, then we cannot say कि molarity जो है ना that will be same as this one. तो वहां पर हम लोग बोलते हैं either they should give you the active mass or activity, या फिर we need to take it as one. So what we say ना, प्रैक्टिकली अगर नंबर तुम्हारा, आई एम सेइंग प्रैक्टिकली, अगेन थ्योरेटिकली तो 0.1 से कम पे डाइल्यूट मानते हैं, बट प्रैक्टिकली ना, इवन इफ इट इज मोलरिटी ऑफ H प्लस इज लेस देन 1 भी चलता है ना, तो वहां तक हम लोग बोल देते हैं कि एक्टिव मास को वी कैन टेक एज मोलरिटी ऑफ H प्लस। बट इफ H प्लस इज मोर देन 1 हो जाए, then A of H plus is actually not equal to molarity, then either they should give you the number, H plus should be given, or we take 1 ले लेते हैं। अगर कुछ नहीं दिया, मान लो बोल दिया 2m aqueous solution of HCl, then concentration has become more than 1, then in that case we cannot take activity as 1. We have to take, या तो वो दे दें जो कि प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन से आता है, या तो वो दे दे तुमको एक्टिविटी ऑफ H प्लस कितना है, या फिर इफ नथिंग इज गिवन वी स्टार्ट टेकिंग दैट एज 1. ओके, दैट्स वन पार्ट। तो नाउ जैसा pH डिफाइन किया तो pOH भी डिफाइन कर सकते हैं, इट विल बिकम माइनस लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ OH माइनस, व्हिच इज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस इट इज माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, लाइक आई टोल्ड यू। For any number x, if I am writing p of x, we'll write this is nothing but minus log of x. So it is not defined only for the concentrations, it is also defined for the numbers like k value, kb value, kw, ksp, ये जितने टर्म मैंने बोले ना उन सब के लिए वैलिड हो जाएगा। For example, if I am writing pKa of some acid, it will be minus log of K of that acid. pKb of some base, that will be minus log of Kb of that base. If I am having pKw, so that is minus log of Kw. Is it okay? Now, big important part, practical purpose से. I'll tell you a special case.
I'll write that as a special case. Like I told you, you need to get it. Normally you'll be getting the numbers in the form of 10 raised to minus something or a into 10 raised to minus something, है ना ऐसा. So special case is if x is 10 raised to minus b आ जाए मान, तो डायरेक्टली देखो ना माइनस लॉग ऑफ इतना करके भी यही आएगा. तो अगर उन्होंने px बोला तो आई डायरेक्टली राइट b. अब इतना करने की जरूरत नहीं कि माइनस लॉग ऑफ दैट मच इतना किया. वैसा ही इफ x इज a into 10 raised to minus b ऐसा कुछ आ गया तो डायरेक्टली राइट px विल बी b minus log a. बार बार इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं. ओके या फिर एक और केस बता देता हूं. इफ x इज रूट अंडर y, I'll tell you, then px will be half of py. Is it okay? है ना, log लिया तो half of बाहर आ जाएगा. That simple thing we have to do. So these are the things you'll be using a lot, and that's why I told you this type of number. Like I'll give you an example. Any doubt in this case? If I give you just one एक question देता हूं. Like if I give you this question, try to solve it. This is -4. Okay, so यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि we need to deal with the various logs, है ना. Now we can have two kind of situations. Either they give you the log का value or they don't give you. वहां पे भी दो सिचुएशन आएंगे. If they have given you the log का value तो वही ले लेना है. If they have not given you, then you can have some approximations, but be cautious. इसी बार हुआ है, कांड हुआ है इस बार. जेई मेंस में इसी बार हुआ है. So I'll write some of the log का value and I'll teach you कि how to handle other values. ठीक है. तो start की कुछ prime numbers के log के value जान लो. Like I'll give you some values. Like log 2 is 0.301. Practically we can take that as 0.3. But I'll take that if nothing is given and I'm having options which are not very close to each other. अभी इस बार क्या हुआ ना, देयर वाज अ क्वेश्चन जिसमें आंसर रिपोर्ट करना था एंड ऐसा कुछ आ रहा था लास्ट में. व्हाट शुड वी राइट? एंड इट वाज नॉट अ क्वेश्चन विद ऑप्शंस. उन्होंने लॉग 2 नहीं दे रखा था. इफ आई राइट 120 So we अपॉन can take 0.3 20 upon कितना आएगा? 0.3. 400 आएगा ना. Yes, sir. बट इफ आई राइट 120 by 0.301 it will be even less than 399. 398 and 399 के बीच में आता है. The nearest integer is 399. And it was not option वाला क्वेश्चन, it was integer वाला रिपोर्टिंग वाला क्वेश्चन था. And they have not given you the log 2 का वैल्यू. अब ये आ गया तो अपने गले की फांस बन जाएगी. Just because you have not written 0.301 will be getting the wrong answer. So we need to be careful about that. अभी मैं बच्चों को बोल देता था approximation कर सकते हो, but only if they have given you the options or given options are not even close, very close. मान लो 400 और 399 दोनों दे देता option, then 399 is more closer to the right answer, है ना. That's why we need to report that. And इस बार तो जैसा मैंने बताया, there was a question, ये इस चैप्टर का नहीं था, kinetics का था, but it was having 120 by log 2 as the ultimate answer. Finally ये आ रहा था. उसके बाद you have to report the nearest integer. तो द नियरेस्ट इंटीजर, बी वेरी कॉशियस, particularly मेन. जेई ऐसा कचरा नहीं करता, जेई एडवांस ऐसा कचरा नहीं करेगा, बट जेई मेंस हैज स्टार्टेड डूइंग सच टाइप ऑफ कचरा. इनफैक्ट दे आर गिविंग यू मेनी कचरा कैलकुलेशन आल्सो. मतलब ऐसा 2.303 into 8.314 into 298 लो करते रहो. If they are giving you such type of question, you need to take a call कि अभी के अभी करना है कि पहले बाकी क्वेश्चन कर लेते, then I'll come back to this calculation, है ना. ये भी सीखना पड़ेगा आपने. So that's why I'm telling you, ये लेना if they have not given you anything but you have got options not very close to each other. Options नहीं है then तो मत लेना. Then तो actual लेके उसके बाद calculate करके देखना क्योंकि nearest integer may change, है ना. तो be very careful about that. Like log 3 is very close to 0.477 जैसा आता है
we practically take that as 0.48. अच्छा log 1 is 0 है ना, log 5 is 0.699 आता है again, we take that practically as 0.7. log 7 is 0.84 something आता है, 847 जैसा कुछ आता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं आता है, बट we can take that as 0.85 and log 11 is very close to 1.04. Okay, log 13 is 1.11. Now if they are giving you any number ना, जैसे देखो अभी क्या दिया है इस क्वेश्चन में, they have given you h plus is 2.5 into 10 raised to minus 4. Now we need to calculate ph, तो I'll write directly, अभी ऊपर शॉर्टकट पड़ा है 4 minus log 2.5. But after that we need to do the calculation, तो 4 minus, अभी इसको मैं log 5 by 2 लिख सकता हूँ ना, and log 5 by 2 can be written as log 5 minus log 2, log 5 minus log 2, and that's why अभी यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं approximate value, but again we need to be careful वो क्या बोल रहा है, तो log 5 is 0.7 मैं ले रहा हूँ और इसको 0.3 ले रहा हूँ, तो then it will become log 0.4 आ जाएगा, तो this will be 3.6 will be the answer. Is it okay? सर लेकिन इंटीजर टाइप में सर डिफरेंस ऑफ 1 चलता है right? नहीं चलता है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, कैसे चलेगा वहां पे मेंस में, एडवांस इतना कचरा नहीं करेगा, आई एम टेलिंग यू अगेन, एडवांस sir. कचरा नहीं कर रहा है, बट मेंस में इफ यू हैव गॉट दैट एंड दे हैव नॉट गिवन यू द ऑप्शन ऑफ दैट रेंज वाला ना, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, एडवांस गिव्स यू द रेंज, Okay. मेंस वो भी नहीं करता है, Okay, sir. एडवांस में आता है, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी आ गई ना, दे राइट कि 398 से 401 तक जो भी आंसर है सब राइट है, एडवांस Okay, में गिव यू सच काइंड ऑफ थिंग, बट मेंस जो है ना एक आंसर रिपोर्ट करके भाग जाता है, इफ यू आर गेटिंग 399 यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स, अदरवाइज यू विल नॉट गेट, सर तो वो एक मतलब सच है। सर मतलब इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन करने में टाइम कितना So मतलब again, that's why I told you that we need to take a call. Yeah. I'm having this much time, whether I should solve remaining questions or I should solve it. मान लो पेपर इतना डिफिकल्ट है कि बाकी क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, तो obviously I'll sit there and I'll calculate it completely, है ना, एटलीस्ट मार्क्स तो मिलेगा मेरे, yes. बट अगर मेरे पास आगे क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने देखा नहीं, I'll go for those questions first, है ना, I'll solve them and then I'll come back again कि अच्छा चलो अब मेरे पास 10 minutes टाइम है, I'm having these 3-4 calculations मैं करके देख लेता हूँ अभी, है ना, Okay, sir. ऑप्शंस है तो इतना दिक्कत नहीं होता है, बिकॉज ऑप्शंस विल नॉट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो अगेन वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट, है ना, Yes. Okay, चलो तो ये क्वेश्चन है, चलो एक और जस्ट करके देख लो, अगेन इफ यू आर हैविंग एनी वैल्यू टेक फ्रॉम हियर, log 10 इज 1 है ना, उसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं, okay, Suchir has got the answer, Ronak has got the answer, good, Mark has got an answer,
Okay, log 9, if I have got log 9, how to handle that? It is log 3 का square, which is 2 log 3, है ना? Log 3 we know. Okay, Mahak, you are changing your answer. In fact, mains में there was a question जिसका answer was 0.0 something आ रहा था. It was like that only. And you have to report the nearest integer. What will you report? You have to report 0. Yes. है ना? If the value is less than 0.5 and if you have to report the nearest integer, you have to report 0. तो बच्चे कंफ्यूज है. इनफैक्ट बच्चे डर गए कि 0 कैसे रिपोर्ट करें. दैट नंबर शुड नॉट बी 0, बट द नियरेस्ट इंटीजर में भी 0 ना. If I am getting 0.08, the nearest integer is 0. So you have to report 0 there. Okay, चलो इस पे आते हैं. Obviously this thing is 5 minus log 1.8 minus this is 5 minus log 6.4. देखो 5 तो कैंसिल आउट हो गया. Now we have got log 6.4 upon 1.8 है ना. We can simplify it even. We are writing log, this is 64 by 18, then we can write it as 32 by 9 है ना, which is 5 log 2 is log 32 minus 2 log 3 is log 9. We'll be writing 5 into 0.3 I am taking right now. Like I told you again, option based है तो फिर जा सकते हैं. Otherwise we need to be careful about that. And this is 0.48 ऐसा ले लिया. So this is coming 1.5 minus 0.96. This is coming 0.54. Again, if you're not taking the exact values, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा. Like Utsa has reported 0.55 है ना. Have you taken the exact numbers? Utsa? Now this is No, sir. greater than 0. Now if you see एक और learning यहाँ से, what I'm trying to teach you here, extra point जो कि आगे GOC में भी discuss करना है. तो for acid, देखो Ka of, if Ka का value is greater ना, this is C6H5COH benzoic acid, PHCOH जिसको लिख रहा हूं मैं, that is greater than K of CS3COH. And then we'll write pK of benzoic acid will become less than that, है ना, because pK is minus log of K. And that gives you one more information, like I told you earlier also. Greater the K, more stronger will be the acid. So lower the value of pK, stronger will be the acid. What we are writing? Stronger acid has greater Ka and smaller pK. Similarly, we'll write stronger base has greater Kb and smaller pKb. This we are going to use even in GOC ka next lecture jo hoga usme we are going to use that also. Any doubt up to this point? Now one more section I'll cover. That is, if I'm given some information about H plus or OH minus ka concentration or pH or POH, then how to identify whether the solution is acidic, basic or neutral. So we'll be talking about nature of aqueous solution. So now whenever we are talking about nature of aqueous solution, what is always valid is H plus into OH minus is Kw. And that's why pH plus POH will be pKw. Is it okay? If H plus into OH minus is Kw, take log on both the sides. तो ये क्या हो गया? Log of H plus into OH minus will become log of Kw. And then
log A into B is log A plus B, log B, है ना? Log H plus log OH minus is log KW. Take -1 से multiply कर दो. So minus log of H plus will become PH, minus log of OH minus will become POH, and minus log of KW become PKW. Now be very careful again. When I'm writing this relation, it is always valid, but when I'm putting the value, it is valid only at 25 degrees C. Similarly, when I write PKW, it is always valid, but when I write 14, it is valid only at 25 degrees C. Is it okay? Now we can have three kind of solutions: neutral, acidic, and basic. Whenever we are having neutral solution, neutral का मतलब इसमें ऐसा नहीं कि उसके ऊपर नेट चार्ज जीरो होगा कि नहीं होगा. नेट चार्ज इज ऑलवेज जीरो इन एनी सॉल्यूशन, है ना? इवन इफ यू आर पुटिंग NaCl, तो Na प्लस आ रहा है तो Cl माइनस भी आ रहा है, तो इट इज इलेक्ट्रिकली तो नेट न्यूट्रल. ऑल द सॉल्यूशंस आर इलेक्ट्रिकली नेट न्यूट्रल. This neutrality is not regarding to the net charge. Net charge is always zero, but it is about the relative concentration of H plus and OH minus. If an aqueous solution is H plus more than OH minus, we call it acidic solution. If an aqueous solution is having OH minus more than H plus, then we call it basic solution. If H plus and OH minus is exactly the same, then either it is pure water or it will be called a neutral solution. So that's why I'm giving you a complete table of this comparison. The basis is like I told you, basis is that only if H plus is more than OH minus, we'll call it acidic solution. H plus is less than OH minus, we'll call it basic solution. And if both of them are same, then we'll be calling it neutral solution. Any doubt? अब वहीं पे मैंने दो डेटा दिया है. एक दिया है जो जनरल है, ये देखो जनरल किसी भी टेम्परेचर का डेटा है. एक मैंने बोला इफ इट इज 25 डिग्री सी, देन ये रूट KW विल बिकम 10⁻⁻⁷. हाफ PKW विल बिकम 7, है ना? तो ये जो कहानी है ना, ये जो आज तक पढ़ते रहते हैं ना, pH लेस देन 7 इज एसिडिक, दैट इज वैलिड ओनली एट 25 डिग्री सी. तो ये कहानी अगेन लाइक आई टोल्ड यू, जो स्कूल्स में रटा देते हैं ना, उसकी लिमिटेशंस होती है मेनी टाइम्स. एंड द लिमिटेशन अबाउट दिस नंबर 7 is that we are talking about only 25 degrees C. आजकल तो टेम्परेचर उससे ज्यादा है. That means you have got a solution at pH equals 7, and if the temperature is higher than 25 degrees C, it is not a neutral solution. It is not a neutral solution obviously. ठीक है, तो we need to take care of that. तो मान लो, अगर मान लो किसी टेम्परेचर पे PKW का वैल्यू 14 की जगह 13.6 हो गया, so half PKW has become 6.8. Then any solution which is having pH less than 6.8 will become acidic, more than 6.8 will become basic, and equal to 6.8 will become neutral. So we need to take care of that always कि ये जो है ना, ये रूट KW या हाफ PKW की कहानी है, वहां से कंपेयर करने का है if the temperature is not 25 degrees. Is it okay? I'm giving you some questions. जरा ट्राई करके देखो. Solve this one. Okay, I've got three answers till now. Four types of answer I've got till now. Sir, is it single option correct or multiple option correct? Consider that as one or more than one. Oh. It is not always multiple, it is one or more than one correct. Okay,
In that also you can have just one option correct also. बट उसमें ऐसा लिख देंगे स्टेटमेंट एंड देन दिस इज आर such kind of modifications लिख देते हैं. Okay, many answers. Still, I am getting many type of answers. D नहीं बोला, बाकी सब बोल दिया. Why not D? KW का वैल्यू बढ़ रहा है, so Okay, temperature so must be higher. Kw, which is given at this temperature, is having a value higher than this one, which was Kw at 25 degrees C. So like I told you, the ionization of water was endothermic. So temperature बढ़ाने से K बढ़ा होगा. So this is definitely at temperature more than 25 degrees C, ना? That's one part. So that's why we'll reject a D option. That's one part. Okay, now अभी देखते हैं बराबर होगा नहीं होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा. But if you are reporting B, then how can you report A? Or if you are reporting B, then how can you report C? अगर H plus OH minus बराबर हो गया तो फिर तो ये न्यूट्रल होगा ना. How can it be acidic or basic? तो ये तीनों एक साथ तो हो ही नहीं सकते. So this will ultimately be a single correct answer only. You cannot have A, B or AC or BC. That is not possible at all. है ना? तीनों A is acidic, B is neutral, C is basic. You can't have two options in this question. है ना? हाँ, D होता तो फिर हो सकता था, but other than that, A, B, C cannot come together. Now we'll be talking about this one. Now that strategy is I can talk about root KW निकाल के या फिर P half PKW निकाल के. If I'm finding it a perfect square ना, मान लो ये अगर स्क्वायर से हैंडल कर सकते हैं, like I have given you the value which is perfect square जैसा आ जाएगा, तो root kw will be 1.2 into 10 raised to minus 7 है ना. अब यहाँ से if I want half pkw ना, I'll directly write 7 minus log 1.2. Is it okay? And that will be 7 minus log, this is 6 by 5. 6 by 5 can be handled like log 2 plus log 3 minus log 5. Log 2 is 0.3, log 3 is 0.48, minus log 5 is 0.7. So 0.78 minus 0.7 will be 0.08, so this is 6.92. So half pKw जैसे ही पता चल गया, now we'll say any pH which is less than 6.92 will be acidic, any pH which is greater than 6.92 will become basic, and pH equals 6.92 will remain neutral. So given pH which is equal to 7 is greater than half pKw, and that's why we'll say this solution is basic. Not A, not B, it is only C. Is it okay? तो वो जो अपना माइंडसेट है ना, pH 7 देखा न्यूट्रल बोल दिया, that is not right. We need to be careful about the temperature, particularly if they have given you the temperature or they have given you the value of Kw. So we need to be careful about that. I'll give you one more question and then we'll close this one. This one. Okay. Okay, Ronak, Rishit, both have given me the answer.
Okay, I've got 1, 2, 3, 4, 5 types of answers. Increase neutral, decrease basic, decrease neutral, decrease only, increase basic, increase neutral तो पहले ही आया था. Okay, these many answers we have got. Okay, let's see. What I told you, if you are increasing the temperature, then KW will increase, है ना? Temperature बढ़ाया तो KW बढ़ गया. KW बढ़ गया तो I'll say root KW बढ़ गया. Then I'll say half PKW will be decreased, है ना? Okay, and this was the neutral point pH. And if I'm having pure water, it is always neutral. Pure water cannot have H plus more than OH minus or H plus less than OH minus, है ना? Because source of H plus and OH minus is water only. So it will always be neutral. It can never be acidic or basic. But because half pKW has been decreased, the neutral point pH is decreased. And pH of pure water will always be the neutral point pH, and that's why we'll say this will decrease. So the answer will be decrease and neutral. Now, when I'm saying this, always remember that अपना जो रटा रटा वैल्यू है ना वो है 25 डिग्री सी पे. So if I'm making a scale, if I say pH equals 7, this was the neutral point but only at 25 degrees. This is neutral point pH at 25 degrees C. Now if I'm increasing the temperature, like in the previous case, previous question, I have increased the temperature. What I am saying, temperature बढ़ाया तो neutral point pH will move leftward. This will be neutral point pH at temperature greater than 25 degrees C. And similarly, if I'm decreasing the temperature, then neutral point pH will move rightward. We'll say this is neutral point pH at temperature less than 25 degrees C. Now, if I say I'm having temperature equal to 30 degrees C, pH equals 7 is acidic, basic, or neutral? So I'll write three situations. At 25 degrees C, pH equals 7 is neutral. If I say at 30 degrees C, pH equals 7, what will be its nature? Basic. It will become basic, है ना? Because neutral point pH has become less than 7, so 7 is coming in the basic region. And like similarly, if I'm saying 15 degrees C and I'm having pH equals 7, now it will become acidic. तो अपना रट्टा जो था ना उसको भूल जाएंगे. Obviously, if we are talking about 25 degrees C and in future cases, if nothing is written, we consider temperature to be 25 degrees C, then 7 वाला is okay. But now, if temperature is mentioned और KW का एक नया value लिखा हुआ है, then we need to be careful. At a temperature which is not 25 degrees C, neutral point pH is not 7, and that's why we need to be careful about the neutral point pH. और उसके हिसाब से we'll be reporting the answer. Is it okay? Today I'll give you just one homework. You have got 5 questions in fact in that. So I'm giving you one homework, and next day say you'll be getting many questions because we'll be entering into different kind of cases जिसकी बात मैं कर रहा था. This one we have got 5 questions. इन सब के नेचर बताने हैं in at a given temperature जिसमें KW का value is given. Okay. So now you'll solve this question. अभी all the new students just please stay for some time. We'll discuss क्या है situation, क्या करना है. बाकी लोग जा सकते हैं.
चलो जी, बाकी लोगों के लिए बाय। Thank you, sir.